Bismillahirrahmanirrahim class. Actually, when I was recording the lecture, these two slides were left because of the internet interruption. So I am repeating these slides. These are very important slides for the alcohol. And in this you can see that as the heading is here, that cough medicines are used for recreational purpose. So why? So people think that as the cough syrups have alcohol, and alcohol is responsible for creating the addiction, or it is that is why the cough syrups are used for recreational purpose. This is not the reason. As syrups are syrups are we can say formulated according to the FDA rule. FDA रूल ये कहता है कि जो इसने लिमिटेड अमाउंट दी हुई है दैट 0.5% फॉर द चिल्ड्रंस एंड 5% फॉर द एज अबव 12 years and for the adults. So following this rule, the syrups are formulated. This concentration of alcohol is cannot be accountable for creating the addiction, or cannot be used for the recreational purpose. लेकिन कफ सिरप रिक्रिएशन क्यों कॉज करते हैं और क्यों इनमें जो है वो एडिक्शन होता है? देखिए, कफ मेडिसिन में DMX होता है. DMX इज डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन. This dextromethorphan is helpful because it suppresses those signals in the brain that triggers the cough reflex, but it also has other less therapeutic effect. If the individual consumes sufficient dextromethorphan, they will experience euphoria and hallucinations. DMX is a powerful psychoactive drug. अब DMX जो है, एक तो ये जो थ्रोट इन्फेक्शन में जो कफ प्रोड्यूस होता है उसको ये थिन करता है. उसके अलावा ब्रेन को ये सिग्नल देता है कि वो कफ रिफ्लेक्स को ट्रिगर ना करे. ठीक है. इसके अलावा जो है इसमें ये खासियत है कि साइकोएक्टिव ड्रग है, यानी ब्रेन को ये जाके रिलैक्स करता है, ये यूफेरिया कॉज करता है. तो जब कंटिन्यूसली कफ सिरप्स लिए जाते हैं तो उसमें मौजूद जो DMX होता है वो ब्रेन की तरफ से रॉन्ग सिग्नल्स आने लगते हैं और पेशेंट जो है वो आहिस्ते आहिस्ते यूफोरिया में चला जाता है. उसको जो है वो हेलुसिनेशंस होने लगती हैं, डिस्टॉर्टेड विजुअल परसेप्शंस होने लगती हैं, and the patient can feel dissociated from their body, almost like they are not on the outside looking in. यानी कि जो एक स्ट्रेस और डिप्रेशन की अगर कंडीशन हो रही हो तो वो सप्रेस हो जाती है, और यूफोरिया की कंडीशन में पेशेंट आ जाते हैं, उसमें बहुत अच्छा फील होता है. और ये कहते हैं इस तरह की कंडीशन को पेशेंट जो है पसंद करने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता वो कफ सिरप्स की तरफ एडिक्शन में चला जाता है. असल में वो कफ सिरप से एडिक्टिव नहीं हो रहा, ना ही उसमें अल्कोहल जो मौजूद है कफ सिरप में वो एडिक्शन कॉज कर रहे हैं, बल्कि उससे मौजूद जो डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन है that is responsible for creating the condition of euphoria, and patient attracts towards the cough syrup for getting the euphoric condition and relaxation, and the patient will become addicted towards the cough syrups. So this is the explanation that why the people think that cough syrup cause recreation and cause addiction, because of not due to the presence of alcohol but due to the presence of dextromethorphan, right? So this is the explanation of these slides. So this is all about the alcohol, and further queries you can ask in the comment box. Thank you.